چمک اٹھے ہیں سلاسل. Now that the chains glimmer. A podcast for friends by friends. Presented by Hick Rosa, Commentary and Words, and Gcash Jahan. Hosted by Asma Abbas. In this podcast, we will attempt to talk about a living politics for today, trying to step away from the usual ways of discussing geopolitics, internationalism, and domestic affairs of post-colonial countries in the global south by turning to the history, present, and future of the people in those spaces. We hope for a language in common to be able to return to a politics that allows us to think of the world as both made by us and unmade by us, and to understand that it is still within our reach to change it and make it look like something that might resemble dreams we have inherited and the dreams we have been weaving ourselves. آج ہم چلے ہیں کچھ دوسری طرح کی باتیں کرنے، اس سیاست کی باتیں جو زندگی سے بھرپور ہو، جو ہماری زندگی کا حصہ ہو، جو ہمیں زندہ ہونے کا احساس دلائے، جو یہ یاد دلائے کہ ہم ہی اس دنیا کو بناتے اور بگاڑتے ہیں. شاید ہمیں ایسے وقتوں میں ان کچھ باتوں سے تقویت ملے. Our first episode is dedicated to a discussion of the current parliamentary and constitutional crisis in Pakistan. I, Asma Abbas, will be joined by Arif Hassan, Hassan Mujtaba, Sandhya Davison, Ali Usman Qasmi, Ehsan Achakzai, and Ajab Ali Lashari. Listen on. نثار میں تیری گلیوں کے وطن، نثار میں تیری گلیوں کے وطن، اے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے نظر چرا کے چلے، جس کو جان بچا کے چلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے نظر چرا کے چلے، جس میں جان بچا کے چلے. اور بہت ہے ظلم کے دستے بہانہ جو کے لیے، یہ چند اہل جنوں تیرے نام لیوا ہے، یہ چند اہل جنوں تیرے نام لیوا ہے، بنے ہیں اہل ہوس مدعی بھی منصف بھی، بنے ہیں اہل ہوس مدعی بھی منصف بھی، کسے وکیل کریں کس سے منصفی چاہیں، بنے ہیں اہل ہوس مدعی بھی منصف بھی، کسے وکیل کریں کن سے منصفی چاہیں. مگر گزارنے والوں کے دن گزرتے ہیں، مگر گزارنے والوں کے دن گزرتے ہیں، تیرے فراق میں یوں صبح و شام کرتے ہیں، تیرے فراق میں یوں صبح و شام کرتے ہیں. بجھا جو روزن زندہ تو دل یہ سمجھا ہے کہ تیری مانگ ستاروں سے بھر گئی ہوگی، بجھا جو روزن زندہ تو دل یہ سمجھا ہے کہ تیری مانگ ستاروں سے بھر گئی ہوگی. اور چمک اٹھے ہیں سلاسل تو ہم نے جانا ہے کہ اب سحر تیرے رخ پر بکھر گئی ہوگی، ہم نے جانا ہے کہ اب سحر تیرے رخ پر بکھر گئی ہوگی. تصور شام و سحر میں جیتے ہیں، گرفت سایہ دیوار در میں جیتے ہیں. آج میرے ساتھ عزیز مہمان موجود ہیں. میں ابتدا کروں گی عارف حسن صاحب سے، جو کہ اربن پلانر، آرکیٹیکٹ، ایجوکیٹر، سوشل ورکر، سوشل ایکٹیوسٹ اور ایک پورا ادارہ ہیں جنہوں نے وہ شعور پروان چڑھایا ہے ان لوگوں میں جو کہ آج بھی کراچی کو اور پاکستان کو اپنے ہاتھوں سے بنتا اور بگڑتا دیکھ سکتے ہیں، اور شاید اسی سے امید رکھتے ہیں کہ کچھ اور ممکن ہے. میرے ساتھ حسن مجتبیٰ صاحب بھی ہیں، جو کہ صحافی، ادیب اور شاعر ہیں، عوام دوست، عوام سے محبت کرنے والے شاعر ہیں اور کا درد ہمیشہ اپنے دل میں رکھتے ہیں. I would call him a truth teller in exile. ان کے ساتھ ہی میری پیاری دوست سندھیا دیوسن ہیں، جو کہ ہمیں دلی سے جوائن کر رہی ہیں، انگلش لٹریچر کی استاد ہیں. ان کا تعلق اسٹوڈنٹ موومنٹس اور پروگریسو کازز میں انوالومنٹ ان کی بہت رہی ہے. ساتھ ہی علی عثمان قاسمی صاحب ہیں، جو کہ مورخ ہیں اور پاکستان کی وہ کہانیاں بتاتے ہیں جو کہ ہم سے چھپائی گئیں، اور جو کہانیاں ہمیں بتائی گئیں ان کے شواہد طلب کرتے ہیں. ساتھ ہی ہمارے ہیں احسان اچکزئی، جو کہ پروگریسو اسٹوڈنٹس کلیکٹیو میں ان کا بہت کردار ہے، اسپیشلی اسلام آباد میں، بلوچستان میں، اور وہاں پہ ان کا نمایاں رول رہا ہے افغان اور پشتون اسٹوڈنٹس کی سپورٹ میں. ساتھ ہی ہمارے ہیں عجب علی لاشاری، جو پروگریسو ایکیڈیمکس کلیکٹیو کراچی میں نمایاں کردار رکھتے ہیں اور وہاں پہ استاد ہیں.
فیض کی نظم سے شروعات تو ہم نے کر لی، تو میں چاہوں گی کہ ہمارے مہمان اس نظم کو لے کے اپنے احساسات کا اظہار کریں، اور آج کے تناظر میں یہ نظم آپ کو کن چیزوں کی یاد دلاتی ہے اور کن کی پہچان کراتی ہے۔ میں دعوت دوں گی عارف حسن صاحب کو کہ وہ یہ سلسلہ شروع کریں۔ نہیں، میں تو دو تین باتیں کہوں گا کہ ہاں، جو نظم کا مفہوم ہے اس کو ایک طرح سے تو ہم اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ نہیں تبدیل ہوا، صورتحال ویسی کی ویسی ہے، اور جس زمانے میں یہ نظم لکھی گئی تھی وہ شاید پاکستان کی تاریخ کا بدترین زمانہ تھا کئی لحاظ سے، مگر وہ پاکستان اور موجودہ پاکستان میں زمین و آسمان کا فرق، یہ وہ ملک نہیں ہے جس کے بارے میں فیض نے نظم لکھی تھی۔ حالانکہ بہت ساری جو اس میں جذبات کا اظہار ہے، اس کے علاوہ جو آبزرویشنز ہیں، وہ آج پہ بھی آپ نافذ کر سکتے۔ دیکھیں، میں اس طرح سے دیکھتا ہوں، مجھے ہو گئے اب کوئی 50 سال اس ملک کی خاک چھانتے، اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو پرانا نظام تھا کمیونٹی سیلف گورننس کا، وہ نہیں رہا، اور جس کی وجہ سے جو رشتے تھے، جو سوسائٹی میں کوہیژن تھا، حالانکہ وہ بہت ظالمانہ کوہیژن تھا، یہ نہیں تھا کہ کوئی اچھی بات، وہ نہیں رہا۔ پنچایت گئی، نہیں ہے وجود میں، مکھی گیا، پٹیل گیا، نمبردار گیا، پٹواری ہے وہ مجبوراً ہے کیونکہ الیکشن کون کرائے گا اور اس کے علاوہ کھاتا کون رکھے گا، وہ بھی چلا جائے گا کچھ عرصے بعد۔ اس کی وجہ سے جو ذات کے گرد ادارے تھے، آئیڈینٹیٹیز تھی، وہ بھی کمزور ہوئی ہیں، بہت کمزور ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ اربنائزیشن کی وجہ سے اب لوگ ایک دوسرے کے آس پاس رہتے ہیں جن کا کوئی ایک دوسرے سے تعلق واسطہ نہیں ہے۔ I see that we are living in a period of social and physical displacement, and the manner in which we related to each other and property and personal law was managed has all changed. محلے کیجئے، انصاریوں کے محلے تھے، بخاریوں کے محلے، بڑی لمبی لسٹ ہے، قریشیوں کے تھے، وادو مل کے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ Slowly they've been eaten away، نہیں رہے۔ یہ جو تبدیلی ہے، اس کی عکاسی آپ کی سیاست میں نہیں ہوتی، اور اس واسطے نہیں ہوتی کیونکہ یہ جو نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے، اس کا کوئی اظہار کا طریقہ نہیں ہے۔ The politicians don't focus on this. They still think in terms of برادری، and at the time of elections they recreate that rather than looking at the present situation. تو ایک تو یہ ہے۔ دوسرا جو میں بہت اہمیت دیتا ہوں اس بات کو، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، I won't go into the reasons. I think the biggest change that has taken place in Pakistan is centered around women. I think it's a very big change. اور اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، مگر اس کے نتیجے میں، یعنی it works both ways، اس کے نتیجے میں اور اس نتیجے کے نتیجے میں ایکسٹینڈڈ فیملی ٹوٹی ہے، اس کے نتیجے میں عورتوں کی تعلیم بڑھی ہے اور بہت بڑھی ہے۔ شہروں میں آپ کی میرج percentage in the age group of 15 to 24 has been drastically reduced, very drastically. اگر میں کراچی کا ایگزامپل لیتا ہوں تو 1961 کے سینسس میں 63% of women in this age group were married. In the 2017 census, 21% of women in this age group were married. تو یہ جو تبدیلیاں ہیں، یہ بہت بڑے پیمانے پہ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ انہیں آپ سیاست میں کیسے ایکسپریس کریں گے۔ ایک اور چیز میں کہتا جاؤں، میں بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں، اس کے تنقید کا بھی شکار ہوا ہوں میں یونیورسٹی سے۔ دیکھیں، جب تک اسٹوڈنٹ یونین نہیں ہوں گے، آپ کے مناسب سیاستدان بھی نہیں ہوں گے۔ آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے 70s کے، پارشلی 80s کے بھی، 60s کے جو سیاستدان تھے، جیسے بھی تھے، چور تھے، ڈاکو تھے، اچھے تھے، برے تھے، وہ پڑھے لکھے تھے اور ان کا سیاسی مسائل سے واسطہ اور تعلق تھا، because they were the product of student unions where these discussions took place. I am a product. آج کا جو طالب علم ہے جسے میں پڑھاتا ہوں، اس کا سیاسی مسائل سے اور سماجی مسائل، اس کا کوئی رشتہ تعلق نہیں، اور یہ ہوگا بھی نہیں جب تک سیاسی عمل دخل یونیورسٹیز میں داخل نہیں ہوگا
اور کالجز میں داخل نہیں ہوا. بس میں یہی کہنا چاہتا تھا. کہنے کو تو بہت کچھ اور بھی ہے کہنے کو، مگر یہ میرے چند آبزرویشنز ہیں جو میں نے دیکھی ہے، تبدیلی جو آئی ہے میرے آنکھوں کے سامنے. Thank you so much. Shukriya, Arif Saab. Sandhya, do you have any thoughts just going? Thanks, Asma. And سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ I'm really glad to be here. I'm very happy to have this conversation with everybody. And also کہ حالانکہ میں ہندی اردو جانتی ہوں اور I can understand and I can speak it on occasion. لیکن میں اپنے ignorance کا خلاصہ نہیں کروں گی. تو میں جتنا ہو سکے میں انگریزی میں بات کروں گی because I'm also not a native speaker of either Hindi or Urdu. I'm actually from Kerala. تو اس لیے Can I say something? Just 1 minute. We have lots of Keralites in this city of Karachi. There is a whole community, and it's a very large community. That's very good to know. That's Bhopal کا جو ریبیلین ہوئی تھی موپلاز کی جب آئے تھے. Yes. Oh, okay. That is another piece of history that I did not know about. So that is great. Thank you. عارف صاحب نے جو ابھی کہا کہ جو تبدیلیاں ہوئی ہیں پاکستانی سوسائٹی میں، وہ آف کورس ہمارے سوسائٹی میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملی ہیں اور کافی حد تک سملیرٹیز ہیں انڈیا پاکستان کے ٹریجیکٹریز میں اور ان کے سوشیو پولیٹیکل historical trajectories mein. But at the same time we are going through a crisis of our own, and which is impacting our lives and livelihoods in a very very intense manner at this moment. And sabhi jante hi hain ki kafi iska ek overtly religious face hai jahan aap criticize nahi kar sakte, and there are plenty of impositions. And in fact I was actually telling a friend today that aisa lagta hai that our everyday lives are just series of flashpoints, and day after day ایک بار حجاب پہ حجاب کا بین ہوتا ہے، پھر دوسرے دن حلال کا بین ہوتا ہے، and so on and so forth. مطلب یہ ہر ہی دن چلتا آ رہا ہے، کوئی نہ کوئی اس میں مرتا ہے، پٹتا ہے، برباد ہوتا ہے. تو اس کے چلتے پھر how do we then make sense of our every day is the crisis for me and for a lot of us, because pandemic سے باہر نکلتے ہی ہم اس میں pandemic سے پہلے بھی ہم اسی موڈ پہ تھے کہ دلی میں رائٹس ہوئی تھی اور CA/NRC پہ جتنا ہوا تھا، مطلب there was a conflagration on that, and then the pandemic happened, and then now it has taken another turn, and with a series of bans and prohibitions on basically Muslim identities. There is a serious kind of an attempt to create that dichotomy of the good Muslim versus the bad Muslim, etc. And the good Muslim again being one who agrees to an overt Hindutva regime, let's say, and submits to that and does not show their religion in public at all. So it is the public face of Islam, or the public face of the Muslim is completely to be erased in many ways, and that is the focus at this moment. So I was telling a friend that it really, going back to Asma, what you had put out, and so beautifully that you had referred to Edward Gison's work, The Poetic's Relation, and those being on those open boats. Right now the future in this country really looks like this complete abyss of everything, of meaning, of identity, of relationality, and there is no poetics left. That it is extremely prosaic, extremely too real, and always the political real is constantly in front of us, and everything else in terms of affective relations, in terms of our emotional states, in terms of our pleasuring selves or desiring selves, all of that has been pushed into the background. And تو کس poetry کی بات کریں ہم، کہاں پہ یہ نظم پڑھے ہیں اب، کوئی جگہ ہی نہیں بچی ہے to read this out, to talk of poetry, to talk of beauty in our daily life. There is no place for it. تو کافی حد تک مطلب اب everyday life has become just about protest. And that is our primary identity, if one is not being a good subject, let's say. But I guess even good subjects are getting to that point where they will have to protest sooner or later. So I think on this point I will let others come in. Thank you so much. Ali, آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ، آپ نے ایک تو اس پوڈ کاسٹ کا اہتمام کیا اور زبردست لوگوں سے ملنے کا، بات کرنے کا موقع ملا. ابھی یہ جو عارف صاحب نے جس طرح بات کی اور جو سندھیا جو بات کر رہی تھی، اس سے میرے ذہن میں یہ آیا کہ جو جس دور میں فیض صاحب یہ نظم
लिख रहे हैं और ये शायरी कर रहे हैं उसमें तमाम तर जबर के बावजूद या ये के पाबंदे सलासल होने के बावजूद एक रजाइयत है, एक ऑप्टिमिज्म है, you know. So there was still that optimism in the air, you know, कि वो चाहे वो पोस्ट कॉलोनियल मूवमेंट की है, चाहे वो नॉन अलाइंड मूवमेंट की है, चाहे वो साउथ थर्ड वर्ल्ड इसकी एक कोलैबोरेशंस की है. सो मेरे ख्याल में मतलब मैं और आरिफ साहब जो ये बात कर रहे थे, मेरे ख्याल में पॉलिटिक्स की जो है ना, द पॉसिबिलिटी ऑफ पॉलिटिक्स व्हिच इन एनी केस, आई मीन in case of Pakistan for various reasons did not exist to the extent in which it existed in case of India. So मैं समझना चाहूंगा आप लोगों से कि हमारे साथ तो जो हुआ सो हुआ, कि हिंदुस्तान में तो हम समझते थे कि एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल पैट्रियोटिज्म, एक तरह का एक रिपब्लिकन आइडियल एग्जिस्ट करता था, which enabled the emergence of certain kind of subaltern modes of political expression. कि एक वहमो गुमान में ये बात नहीं आती कि एक दलित वजीर आला बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियासत का. पाकिस्तान में तो ये मुमकिन नहीं है, हालांकि जो शेयर ऑफ पॉपुलेशन है पंजाब में अलग से जो दलित पॉपुलेशन बनती है, उस तरह से जिसको आप कास्ट में डिफरेंट मोल्ड ले चाहिए, वो बनती तो उतनी है, वो भी 25% लैंडलेस या मुख्तलिफ कैटेगरीज ऑफ कमीज ऑफ लो कास्ट ऑफ लैंडलेस ऑफ लेबर्स ऑफ दैट. लेकिन वो उस तरह की पॉलिटिक्स पाकिस्तान में तो ना पनप सकी. और मैं ये भी सोच रहा था कि एक वक्त था, एक दौर था कि पाकिस्तान में चाहे एक ट्रिवियल सी बात लगेगी लेकिन कलेक्टिव वर्क ऑफ मार्क्स मिलते थे या कलेक्टेड वर्क्स ऑफ माओ थे, you know. तो मैं एक दफा कुछ साल पहले लाहौर में शायद प्रोग्रेसिव पब्लिशर्स थे, जब वो का मैं नाम भूल गया, अब्दुल्ला मलिक के जो भाई थे जो अभी हाल ही में फौत हुए, वो हयात थे, उनके पास गया और मैं जानना चाहता था कि क्या अब ये मैं खरीद सकता हूँ, कहीं से मिल सकते हैं. तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो हिंदुस्तान में किसी गोदाम में पड़े हुए और वहां से यहाँ तक मंगवाने में उस पर कुछ 50,000 का 70,000 रुपए का खर्चा आएगा. तो कहने का मकसद ये है कि there was a moment, there was this vision for the future, the possibility of an alternative future, which we all shared and for which we were able to struggle. So the real crisis for me, and that's the kind of optimism which I see in Faz poetry, कि वो उस वक्त हालांकि वो कम्युनिस्ट पार्टी बैन हो गई है, वो जेल में है, लेकिन ऑप्टिमिज्म है क्योंकि पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है. और अब सबसे बड़ा क्राइसिस जो मुझे नजर में आता है कि उस पॉलिटिक्स का, उस पॉसिबिलिटी का खत्म हो जाना और उसकी जगह पर एक खास तरह का न्यू लिबरल ओवरलैपिंग कंसेंसस बन जाना पॉलिटिक्स पर और इकोनॉमी पर, और उसके नतीजे में फैज का भी कमोडिफाई हो जाना कि वो कोक स्टूडियो में गाया जाएगा, उनका कलाम कश्मीर फाइल्स के लिए बेचा जाएगा, और वही कलाम के जिसके ऊपर राइट विंग हिंदुत्वा को एतराज था कि इसमें बुतों को गिराए जाने का जिक्र है. द डेथ ऑफ मेटाफर, मतलब जो आप बात कर रही थी कि पोएट्री और एस्थेटिक एवरीडे में, सो वो उसको फिल्म में चलाने पर उनको वो कोई एतराज नहीं. सो मेरे ख्याल में सो व्हाइल वी टेक दैट इंस्पिरेशन, दैट ऑप्टिमिस्टिक sort of like spirit from Faz's words, but at the same time, the given reality is sad, but at the same time, we cannot give up hope. That's all I have to say. थैंक यू अली, बहुत शुक्रिया. एहसान, आप कुछ कहेंगे? बहुत शुक्रिया. मोस्ट ऑफ देम आर माय टीचर्स और उनके सामने बोलना शायद बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए. फैज साहब को समझना और इस जो पॉलिटिकल डिस्कॉर्ड इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है, एक तनाजुर जिस वक्त फैज साहब ने वो ये नज़म लिखी थी और जो हालात है इस वक्त पाकिस्तान में, तो वो बहुत ज़्यादा मैचिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेम है. इसी एक डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन पाकिस्तान में चल रही है, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी एक अलायंस है डेमोक्रेसी के अगेंस्ट. बहुत शुक्रिया. हसन, आप प्लीज, ओवर टू यू. सबसे पहले तो जो है हिक रोसा के साथियों का जो है उनको मुबारकबाद के उन्होंने एक ऐसे दौर में पोस्ट कार्ड की शुरुआत की है. जैसे फहमीदा रियाज ने कहा था कि पत्थर तो कोई टूटा जीते रहो दिल वालों के. आप देखेंगे जितने भी चैनल हैं उसमें बड़े सो कॉल्ड जो लिबरल और जो लेफ्ट नुमा भी जो दावा करते हैं, वो भी जो है अपनी बात खुली तरह क्लियर जो है कहने से गुरेजा हैं. और बात यह है कि जैसे फैज साहब की इस शेर से शुरुआत हुई आज के पॉडकास्ट की, एक बात के बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुनसिफ भी से वकील करें किससे मुनसिफी चाहें. तो फैज साहब ने एक
उस जमाने में ये बात कही थी, एक और बात भी कही थी उस जमाने में कि गर्दन मखलूक है हर हाल में खम है, एक बाजो एक कातिल है कि खून रेज बहुत है। तो ये अगर दोनों अशार को देखा जाए तो आज भी सूरत हाल वही है, स्टेटस को मेंटेन है जो है, और आज जरा सी भी कोई तब्दीली नहीं आई, वही सूरत हाल है। और सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल रिसाइकलिंग का हुआ है मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान के हुक्मरान तबकों ने किया है, जैसे बड़े प्यार से वहाँ हमारी मीडिया जो है सो कॉल्ड आजाद मीडिया भी कहती है इस्टेब्लिशमेंट, वो बिल्कुल ऐसे जिस तरह के गांव में लड़कियां अपने मंगेतर का नाम नहीं लेती, वो फौज का नाम लेने से गुरेज़ हैं और वो कहती हैं कि इस्टेब्लिशमेंट। तो वो इस्टेब्लिशमेंट ने आज तक सबसे ज्यादा सो कॉल्ड इस्टेब्लिशमेंट ने या जो असल मालिक हैं पाकिस्तान के, पाकिस्तानी इक़्तिदार के, क्योंकि अवाम जो इक़्तिदार आला जो असल वारिस होने चाहिए अवाम, वो तो शुरू से ही इस पूरे खेल में है ही नहीं, शराकतदार नहीं है। तो उन्होंने रिसाइकलिंग का बड़ा खूबसूरत इस्तेमाल किया कि वही अगर आप देखेंगे तो हिस्ट्री में पाकिस्तान की पॉलिटिकल चेकर्ड हिस्ट्री जो है उसमें भी आप देखेंगे कि 53 से लेकर अर्ली 50 से लेकर आज तक वही जो है क्या कहते हैं कि अजीज हमवतनों अस्सलाम वालेकुम भी वही है, और रेजोल्यूशन ऑफ असेंबली के अगर लैंग्वेज कंटेंट देखें, लैंग्वेज देखेंगे उसमें भी कोई फर्क नहीं आया। तो बुनियादी तजाद जो है पाकिस्तान का उसकी कोई भी बात नहीं करता। कल भी मैं जर्नलिस्ट दोस्तों के साथ बैठा था तो वो स्टोरी ये है कि फरेह खान का जो है पर्स $10 लाख का है, उस पर खत्म होती है, मगर असल जो तजाद जो पाकिस्तान का जो असल खबर है वो ये जो पाकिस्तान का जो असल तजाद है वो है फौज और पाकिस्तान के मखलूक है, उस पर कोई बात नहीं करता। और पहले जिस जमाने में फैज साहब ने नज़म लिखी थी उस जमाने में 22 खानदान है, मगर असल खानदान जो बिल्कुल एक क्लान बन चुका है, कबीला बन चुका है, आर्मी चीफ सरदार है, उससे कोई भी बात नहीं से गुरेज़ा है। अब सब जो हैं एक ही जनरल बाजवे के एक ही बूट में फिट हैं, अपोजिशन हो कि हुकूमत हो, और वो एक हैं कि उनको एक्सटेंशन किस तरह कि 2 जनरलों की पोस्टिंग और ट्रांसफर पे पूरा झगड़ा है। मगर क्या सवाल ये है कि अगर तब्दीली आए भी विद इन और आउटसाइड असेंबली तो क्या हजारों लोग जो पाकिस्तान में गुमशुदा हैं, क्या सालों से बरसों से गुमशुदा हैं, जिंदा हैं कि मुर्दा हैं, उनकी कोई खबर भी आएगी या वो वापस भी आएंगे? कौमों को जो पाकिस्तान एक सेंट्रल जेल है अप्रेस सब नेशनलिटीज का, उनको बेसिक जो है हक वो मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे? तो ये बड़े सवाल हैं जिन पे हमें जो है गौर करना चाहिए, बात करना चाहिए। ये नहीं कहता कि सड़कों पे कोई निकले हथियार ले, मगर जो आर्ट है हम जो कर सकते हैं, जो शायरी है, जो हमारे जो अल्फाज हैं और जो इल्म है थोड़ा बहुत है या थोड़ा है, तो उसके जरिए हम बिल्कुल हमें इस पे बिल्कुल सोचना चाहिए, जो है इस पे जो है काम करना चाहिए मेरे ख्याल में। ये शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये जो तजाद हमें नजर आ रहा है कि चीजें बदली हैं कि नहीं बदली, और इसमें पहली बात तो ये कि सियासत और सियासी सोच क्या वो भी नहीं बदली। अगर उसमें एक तब्दीली आई है तो किन अवामिल की वजह से वो तब्दीली आई है? जो पॉसिबिलिटी की आप बात कर रहे हैं अली, वो क्यों चली गई? मतलब आर वी लाइक रिपीटिंग हिस्ट्री और डू वी अंडरस्टैंड मोर अबाउट दैट हिस्ट्री नाउ देन वी अंडरस्टूड व्हेन इट वाज अनफोल्डिंग, यू नो? सो मैं वॉल्टर बेनिमिन को मैं पढ़ती हूँ तो वो कहते हैं कि जैसे जब हिस्ट्री अनफोल्ड होती है तो बहुत सारे उसमें जो पॉसिबिलिटीज हैं जो एक तरह से रायगां चली गई होती हैं वो वहीं रहती हैं कहीं पीछे। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम मुड़ के जो अनरिक्वाइटेड पॉसिबिलिटीज हैं उनको थोड़ा सा अटेंशन दें। इस मौके पे हम तारीख को किस तरह से देख सकते? आरिफ साहब ने स्टेट की बात की कि वो सियासत वो नहीं है, रेल्म ऑफ पॉसिबिलिटी जो भी आउटलाइन हुई थी एक इंडिपेंडेंट स्टेट की वो नहीं है, बट आई थिंक उसमें भी शायद ये समझ आती है आज के वो जो हम समझते थे कि वो स्टेट का जो प्रोजेक्ट था, you know, maybe it was never that. कि जो हम in hindsight हम समझते हैं कि independence or post-coloniality meant something very specific. What is left to people, what is left for us and with us is not the same thing that survived with the ones who had colonial and imperial power. शायद हमने state building में जो investment की है, if it has come from basically just attending to the military and allowing that to become the sole arbiter of legitimate physical violence,
violence. तो हमने शायद legitimacy, the blackmail of the post-independence, the partition, the kind of nationalism that we had to adhere to build a Muslim nation or whatever. हम क्या बनाना चाह रहे हैं और बताना चाह रहे थे as an institution, how it has morphed. ऐसा लगता है कि शायद फैज के वक्त में शायद कुछ और उम्मीदें थीं, शायद वो प्रैक्टिसेस नहीं बदली, लेकिन उनकी जो एसोसिएटेड उम्मीद है वो फर्क है. जिस तरह इंसान को देखा जाता है, शायद वो फर्क. आरिफ साहब saying it was a very brutal cohesion, yes, created the enemy to be able to strengthen the state in a very Carl Schmitt kind of way. But what else was the state meant to be at all? किसने हमें सिखाया कि ये state है? You know, when I read earlier ideas of how decolonization happened, we actually understand that we weren't left with the things they say we were left with. अभी एक नई चीज सामने आई है कि अदलिया ने कमिट कर दिया है कि पार्लियामेंट बहाल हो जाए. बट आई वाज जस्ट वंडरिंग कि जो भी ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में अभी जो हुक्मरान हैं उनकी जो शक्ल है वो कितनी माजी की शक्लों से मिलती है और किस तरह से फर्क है. यू नो, इवन जो हरीफ हैं इस वक्त, उनमें क्या फर्क नजर आता है हमें, और हम क्या चीजें हाईलाइट कर सकते. कोई ऐसी खबर या कोई ऐसा ऑब्जर्वेशन हो आपके इन पास 2 हफ्तों में जो आप शेयर करना चाहें, जिससे कोई चीज आपके लिए क्लैरिफाई होती है रादर देन मडल होती. मैं अगर आप इजाजत दें तो मैं क्विकली, क्योंकि आप वॉल्टर बेंजामिन की जो आप बात कर रही थी तो मुझे उसी थीसिस से मुझे उसका वो फिक्रा बहुत पसंद है कि जिसमें कि अगर दुश्मन जीत गया तो फिर माजी भी नहीं बचेगा, और जिन वैल्यूज को और जिन लोगों को हम और उनकी कुर्बानियों को हम चेरिश करते हैं वो भी नहीं बचेंगी. और ये है कि वो दुश्मन ने जीतना बंद नहीं किया है, दुश्मन जीते जा रहा है, और दुश्मन की वजह से, और इसी का ये शाखसाना है जो मैं अभी जिक्र कर रहा था कि हमसे हमारा वो हाफजा, हमारी वो मेमोरी, हमारी वो लेगेसी भी, चाहे वो फैज है चाहे वो भगत सिंह है. हिंदुस्तान में भगत सिंह को किस तरह अप्रोप्रिएट किया गया है और एक राइट विंग पॉलिटिक्स का उसको एक सिंबल बनाया गया है. But at the same time, I mean, I would say that possibilities. So I would say that as a historian, I feel that a historicization of this entire project will enable the opening up of like various kinds of cracks, fragmentations that inhered in that process of post-colonial state formation. ऐसा तो नहीं कि एक legitimate consensus, एक democratic consensus achieve हुआ. और इसलिए मेरे लिए जो 50 की दिहाई है, जो मैं अभी जो recent काम भी कर रहा हूँ उसमें, तो 50 की दिहाई है वो बहुत अहम है कि जहाँ पर बंगाल के ऑपोजिशन लीडर्स, चाहे वो हिंदू थे या मुसलमान थे, उन्होंने शदीद मज़ाहमत की और उन्होंने एक जो ढांचा पाकिस्तान के लिए खड़ा करने की कोशिश की was based on the model of federal democratic politics. And that is why I feel पाकिस्तान की तारीख में जो मार्च 1940 लाहौर करारदाद, it's a foundational document on which they were trying to create that, right? तो एक जो अगर तारीख हमारे पास ये है कि जिसमें an overarching और state institution जो है उसकी hegemony क्रिएट होती है, वो अपनी hegemonic power के जरिए military enforces a certain kind of ideological apparatus which inhibits the possibilities of any political democratic formations to take place. but उसके साथ ही साथ एक उसकी critique की और एक alternative positing of Pakistani democratic federal structure की वो मौजूद रही है. फिलहाल अगर हम जो Marxist mobilization है या जो labor movements है उनको एक तरफ भी रख दें, लेकिन within that kind of constitutional framework तो वो तारीख मौजूद है, उसको अचीव करना, उसके साथ री एंगेज करना वो बहुत अहम है. मसला सिर्फ ये हुआ है कि 71 के बाद से जो बंगाल प्रॉब्लम था कोट एंड कोट, वो तो पाकिस्तान की रियासत के लिए खत्म हो गया. 71 के बाद से जो तमाम एक ही तरह की आइडियोलॉजिकल पोजीशन पर तमाम पार्टियां आ गई, सेंटर ऑफ राइट एट द मोस्ट या एक्सट्रीम राइट. सो ऐसे में ये तारीख हमें दे सकती है. दूसरा मेरे ख्याल में ये इसका जो एक डीपर स्ट्रक्चरल एनालिसिस जो बहुत सारे लोगों ने किया है प्रेजेंट मूवमेंट का, लेट गेट बैक टू हिस्ट्री, वो अयाज मलिक ने बहुत अच्छा काम किया है और वो उनको पढ़कर हमें अंदाजा होता है कि मौजूदा क्राइसिस है इसमें देयर आर नो मेसायास, देयर इज नो लाइक क्या ये समझा जाए कि ऑपोजिशन ने कोई बहुत एक पब्लिक मोबिलाइजेशन करके हुकूमत को या फौज को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है. ऐसा कुछ भी नहीं है. क्या जो ऑपोजिशन
ہیں وہ بحریہ ٹاؤن کے ایشو پر فار انسٹنس کیا ان کی کوئی مختلف پالیسی ہے؟ کیا راوی اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ جو لوگوں کو زمینوں سے نکالا جاتا ہے ان کی کوئی الگ پالیسی ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں. فوج کے ساتھ مل کر حکومت بنانا اور وہی ایک ہی طرح کی پالیسی کو ٹو کرنا, بلوچستان کے وسائل پر قبضہ کرنا, پشتونوں کے ایریاز کو مزید سیکورٹائز کرنا, کیا اس میں کوئی کہیں پر کوئی تضاد موجود ہے یا کوئی ڈپارچر موجود ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سو میرے خیال میں ہمیں یہ بہت کلیئر ہونا چاہیے کہ پاکستان میں there is no real opposition in that sense which takes on the state and what the state stands for and takes lead for any kind of radical change in the overall structure. Thank you, Ali. That's really, really helpful. And actually often to my students say that, like, if Marx was someone who wanted us to treat the living with a living method, he said, right? Like, don't kill the things that you study. Benjamin is more our friend in a certain way because he makes us attend to the dead with the living method as well, right? You know, maybe there's a way that, you know, my suspicion of happy communists is very real because I just feel like history means, again, an object, you know, kind of enclosing all of these things that need to be broken open. And like, we actually do need to break that open. Jis tarah aap keh rahe hain ki jo cheezein zam ho gayi hain ek dusre mein, I mean, that totality is not singular, right? There's actually a lot happening. And the slogans of these thinkers, like, it's their method that is needed for political awareness and education, right? I think, how do you analyze this current formation of things in a way? بہت دفعہ ان کانسیپٹس کے اندر رہ جاتے ہیں کہ ہم کسی کو بس وہ سکھا دیں کہ انہوں نے کیا کہا, بٹ آئی تھنک جو انہوں نے کیا وہ ہم نہیں بہت دفعہ سکھاتے کہ کیا ہے وہ میتھڈ which has some possibility for politics. Thank you so much, Ali. So lovely to just learn from you. عارف صاحب, اب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ وہ باتیں کی ہیں علی عثمان صاحب نے, وہ بہت اہم ہیں اور ان پہ بات چیت کرنے کی ضرورت ہے. اور تاریخ تو کئی زاویوں سے دیکھی جا سکتی ہے, پاکستان کی تاریخ کو بھی کئی زاویوں سے دیکھا جا سکتا ہے, مگر جس کسی زاویے سے آپ دیکھیں اس میں جو کنٹرول ہے وہ پاکستان کی فوج کا ہے. بہرحال it doesn't matter how you look at it. اور اس میں اور چیزیں بھی ہیں. آپ کے وجود میں آنے کے 1.5 سال کے اندر 1935 انڈیا ایکٹ کو استعمال کر کے آپ کے بانی نے 2 حکومتوں کو ڈسمس کیا, ایک فرنٹیئر کی حکومت اور دوسری سندھ کی حکومت, اور وہ عجیب و غریب وجوہات تھیں جس کی وجہ سے ڈسمس کیا گیا. آئی تھنک دیٹس اے ٹریڈیشن. اس کے علاوہ جو اہم بات ہے اس میں کہ آپ کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں یہ بہت بحث ہوئی کہ آپ ایک مسلمان قوم ہیں یا آپ کئی قومیں ہیں جن کو ایک فیڈریشن میں اکٹھا ہونا ہے. I think those were very interesting discussions that took place at that time. Of course, مسلم لیگ کے پاس ووٹ زیادہ تھی جو انہوں نے اپنی رائے وہاں نافذ کی. مگر جاتے جاتے میں ایک چیز کہہ دوں کہ علی نے جو ایک بہت اہم بات کی ہے وہ امید کی تھی شروع. خیر امید بھی تھی, فیض صاحب کی کچھ نظمیں ہیں جو بالکل نا امیدی کی بھی ہیں آگے چل کے جیسے حالات تبدیل ہوئے, مگر انہوں نے جو بات کی تھی امید کی. جب سیاسی حکمرانی میں اور معاشرے کے ارتقاء میں تضاد ہوگا تو امید نہیں ہو ہی نہیں سکتی. یہ 2 چیزیں جب تک یکجہتی نہیں ہوگی امید آپ کے پاس ہو نہیں سکتی, نہ ہی ریفارم ہو سکتا ہے. صحیح. تھینک یو ویری مچ ٹو ایوری ون فار آل دیٹ دے ہیو سیڈ. Thank you so much. How do we understand the desire to create a Muslim nation and at the same time as the production of, for instance, a Jewish nation that was happening in the context of Israel, and they're literally happening at the same time? The ability to imagine different paths of post-coloniality actually looking, you know, to the same tricks. I mean, we don't think nations have always existed. قومیں ہمیشہ سے تو نہیں تھی, you know, کہ جو ہم الفاظ میں استعمال کرتے ہیں, جو ہم نارملائز کرتے ہیں کہ ہاں پہلے سے قومی شعور تھا, they're all produced in this time for us. جو بھی ورلڈ سسٹم بنا جو کہ اسٹیٹ ساورنٹی پہ بیس تھا, جو بھی پوسٹ کولونیل اینٹیز بنی, ان کی کنیکشن نیشن اور that particular assertion of sovereignty couldn't happen without either of those things. And that might be, علی جو آپ کہہ رہے ہیں, that's probably the difference with India. جس طرح آپ, but سوال یہ ہے کہ وہ چیز بھی کیسے devolve اس میں ہو گئی, like despite the very different pathways initially, like how do they like end up in looking so similar? And that is, I think, a really key question کہ کیا ہم الگ کر سکتے ہیں ان ملکوں کو جو چیزیں ہو رہی تھیں مختلف جگہوں پہ. Can we actually ever separate them? جو ابھی نئی باؤنڈریز بنی ہیں اس کے اندر ہم کیسے سڈنلی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہو رہا ہے وہ سڈنلی ایک دم سے وہ چیز اس باؤنڈری کے اندر
myth hai, right? That we somehow, from this point onward, political science and geopolitics will follow these rules, and this is how we impact each other. The severance of those pathways from each other, I think, jo thoda sa attempt kiya tha logon ne ki unko dobara jode 1950s mein. I mean, I appreciate, Ali, that you're studying that era, because that remains a very underattended era. I appreciate the emphasis on the era, but also how do we separate the discussion of nation states where they're so new? Like, how do we artificially produce these entities, right, that become objects of study and objects of history, right? Aapko bhi kitna kaam karna hota hai ki to call something Pakistani history versus some other kind of history. You know, how did we fall into these traps? But, you know, thank you. हसन, प्लीज आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं अर्ज करना चाहूंगा, खास तौर पर प्रेजेंट मोमेंट की जो उन्होंने बात की, तो ये जो हिस्ट्री है, और हमारा ये भी एक काम होना चाहिए कि इस पॉडकास्ट में कि हम अपने ऑडियंस को जो है एजुकेट करें उस हिस्ट्री के बारे में. कितने लोग जानते हैं, क्योंकि पीएचडी स्टूडेंट्स की डिसर्टेशन में तो है, तारिक अली की अंग्रेजी की किताबों में तो है ये 50s, मगर ये ओरल हिस्ट्री बिखरी हुई है. कितने लोगों को पता है कि टोबा टेक सिंह में किसान कॉन्फ्रेंस हुई थी जी. शहजादपुर जो सिंध के सागर जिले में शहर है, उसमें भी किसान कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसने बाद में जाके नेशनल अवामी पार्टी का जो है बुनियाद रखा, जिसमें बादशाह खान तक शरीक हुए थे उस छोटे से शहर में, जिसमें उस्मानी थे और लोग. ये जो शऊर है, अभी 4 अप्रैल को जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी थी, तो सब कह रहे थे कि शऊर जो है पाकिस्तान के लोगों को, जुबान जो है वो जुल्फिकार अली भुट्टो ने दी. ये जो गलत तारीखी मफरूज़े हैं और हमें हिस्ट्री मिलती नहीं, या डॉक्टर मुबारक अली है, या मनान अहमद आसिफ हैं, या फिर डॉक्टर अजीज हैं, उसके अलावा अवाम नास तक जो हिस्ट्री है वो अभी तक नहीं पहुंची, जो सियासी हिस्ट्री है. कितने लोगों को पता है कि कमर योरिश नाम का एक आदमी था, हुसैन नासिर से पहले भी शाही किले में गया था सिर्फ पंफलेट लिखने पे, जो माशाल्लाह के खिलाफ पंफलेट उसने लिखा. प्रेजेंट मूवमेंट का लीडर हैदर जतई जो सिंध का था, उसने पंफलेट लिखा था जस्टिस ऑफ चीफ जस्टिस मुनीर की नाइंसाफी पे, असेंबलियों के लिए उसने किया था. तो ये सारी चीजों को उसकी जरूरत है कि हम ऐसे जो है डिस्कोर्स में लाएं और लोगों तक, और इस पर ये सिर्फ मेरा. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और उसी हिस्ट्री में जाके और लोगों से वो समझे कि कौन किसकी हिस्ट्री थी, वो पाकिस्तान की हिस्ट्री थी कि लोगों की हिस्ट्री थी, वाज इट द पीपल्स हिस्ट्री, वाज इट द हिस्ट्री ऑफ द किसान, कि जो बना रहे थे उनकी हिस्ट्री थी ना, हमने उसको इरेज कर दिया. मुतबर्रिक शख्सियात को भी जो कहते हैं, उनको भी जो है इस डाक में लाना है. जिस तरह जिन्ना साहब ने सिंध और उसकी तो असेंबली तो टूटी, मगर बलूचिस्तान पे फौज कशी जो थी, बजोर बंदूक बलूचिस्तान को शामिल किया गया खान अफकलात की, उसका खत्म करके. तो इस सारी चीजें डिस्कोर्स में होनी चाहिए. हम हर हफ्ते यही कह रहे हैं, आप फिक्र ना करें, एक हिस्ट्री का वर्क निकाल के उस पे फोकस. आई थिंक दैट वुड बी नाइस वे टू डू इट एंड कनेक्ट इट टू अदर कंट्रीज एट दैट टाइम. दैट वुड बी अ रियली लवली वे ऑफ कोडिंग द हिस्ट्री विद अ टाइटल दैट वो कौन सखी थे जिनके लोगों की अशरफियां छन कर, कौन थे लोग जिन्होंने ये हिस्ट्री बनाई, असल हिस्ट्री है पाकिस्तान की जी. थैंक यू. अजय, जो खबरों में चीजें हैं उनसे अगर आपको तारीख के बारे में थोड़े या तो सवाल उठते हैं या कोई क्लैरिटी मिलती है, हम उस पर डिस्कशन कर रहे हैं. आप बताइए किस चीज को आपने ऑब्जर्व किया है पिछले 1-2 हफ्तों में. Thank you so much for even inviting me over here. Happy to hear all of you and happy to see you after a long time. जी. People who are, मैं देख रहा हूँ तो मुझे बिल्कुल एक तमाशा लग रहा है, कठपुतली लग रही है, और उस कठपुतली के समझें कि कंट्रोल के किसी एक के हाथ में है, जो कि बड़ा यूनाइटेड है, जो कि बड़ा समझें कि वही लग रहा है कि एक ही पार्टी है. और बड़ी अनसर्टेनिटी है लोगों में, बड़ी अनसर्टेनिटी है. अहले इल्म, अहले जो अदब हैं, वो किस माशरे में का हिस्सा हैं, हमारे पॉलिटिशियंस कहाँ जा रहे हैं, वो जो चीज़ें हैं वो सरेआम मंजर आम क्यों नहीं लाना चाह रहे, या इवन जो हैं वो अपने राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे. अगर बड़े बड़े लीडर्स और बड़े बड़े लोगों के साथ ये हाल है, तो एक आम शख्स या एक आम शहरी है, उसका जो स्टेक है पूरे मुल्क में वो कितना रिस्क में है.
एक आम शख्स की जिंदगी कितनी, उसकी तो कोई हैसियत ही नहीं है। अगर हम सोचें भी सही, फाइनेंशियल क्राइसिस हो चाहे अनस्टेबिलिटी हो, डेफिनेटली साइकोलॉजिकली हर एक आम शख्स पे उसका बड़ा एक इम्पैक्ट है और एक अनरेस्ट सी सिचुएशन है। हम तो ये भी सोच रहे थे कि पता नहीं क्या होगा, कि शायद घर से बाहर निकलेंगे कि नहीं, पता नहीं क्या होगा। ये जिस मतलब डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, एक अनसर्टेनिटी की कंडीशन है। कराची तो वैसे भी मतलब ये नहीं इतनी 4 करोड़ आबादी का उसमें समझें उसमें है, तो डेफिनेटली स्ट्रीट क्राइम इस सिचुएशन में अनसर्टेनिटी में सबसे ज्यादा हो रहा है। ये मुख्तलिफ चीजें हैं जो कि मतलब समझें कि एक आम शख्स जो है ना, वो उसकी सोच है कि ये चीजें पॉसिबल हैं होंगी, लेकिन दैट्स, मैं कह रहा हूँ कि पता नहीं ये डेमोक्रेसी है या कोई और चीज है। बड़ा मुश्किल है इस पहलू को समझना और देखना एक आम शख्स के लिए। बहरहाल देख रहे हैं, बस सारा ऑब्जर्व कर रहे हैं, खामोश है पाकिस्तान में रह के। आई थिंक हमने इस पॉडकास्ट के थ्रू ये भी लोगों को बावर कराना है कि हम में शऊर है, और हम जो ले पर्सन है, जो दुनिया को अपने जाविये से देखता है, कि उनका देखना भी जरूरी है और वो भी नॉलेज है। तो हम नहीं चाहते कि हम अब हिस्ट्री, हम एक्सपर्ट के अंदाज से नहीं बात करेंगे, हम हिस्ट्री को एक मेहमान बनाएंगे। हमारे कौन से दोस्त हमें मिलते हैं, कौन से लोग हमें पहचानेंगे भी नहीं अगर हम उनसे अभी मिलते। आज बहुत शुक्रिया आपका। और ये संध्या भी पहले इसी तरह की बात कर रही थी कि हिंदुस्तान में कि वहां पे जो ये अनसर्टेनिटी है वो शायद थोड़ा एक्सप्लेन भी करती है कि यूथ का क्या रिस्पॉन्स है। इंडिया में तो यूनियंस भी थी, अभी भी हैं, जो शऊरी चीजें जो हम कहते हैं, the absence of which आरिफ साहब was lamenting, is there something to be said for कि वहां पे क्या डिस्कोर्स है और कहाँ पे वो इस वक्त एक तरह से, जो हसन जैसे पहले बात कर रहे थे कि एक तरह की जो performative leftism has taken over a different kind of embodied lived politics, तो वो भी एक नई सिन्फ है ना इन चीजों की। और उसमें हम ये नहीं कह सकते कि हम लोगों को स्ट्रीट्स में से ले जाके पढ़ा दें, ये बात नहीं है, क्योंकि वो भी एक false opposition है, right? तो there is something about what has removed and made those differences either irrelevant or relevant. You know, that's another way of looking at it, कि वो कौन से फर्क थे जिनसे I want to understand why despite those differences something similar was underway. In fact, when the discussion was going on before, it just struck me that, I mean, I was reminded of the fact that some in this national imagination and has been very successful for the Indian non-believer. So for the Indian anti-national, and who is anyone who asks questions of the government, is a dissenter, is in any form or role, the refrain is "Aap Pakistan chale jaiye," go to Pakistan if you're so unhappy here. So this insistence on otherness, and not just of the so-called anti-national subject within India, but also of Pakistan, and which is completely seen and cast into that mold of absolute otherness and of the enemy and of people who are not like us, etc. And not just not like us, that is your destiny if you do not conform. Also, I would like to basically point to the fact that India, जो हम इस दौर से गुजर रहे हैं अब इंडिया में, this should be a cautionary tale for anyone, who's been following this trajectory, because हम जब optimism की बात करते हैं, और इंडिया में भी काफी बहुत optimism रहा है, and we were all of the politics, the poetry, the literature, art, whatever you name. And there was, even while the future was a dark place, as it always is, the future is always unknown, it is always abyssal, but वहां तक पहुंचने का एक hope है, वो खत्म हो गया है यहाँ पे. The future is no longer a place of any kind of radical revolutionary possibility. It is a place of regression for a lot of people. And whatever wins we have had along the way historically, we've been reneging on that. We've been going back on those wins. अगर आप कास्ट की बात करें, या जैसे अली उस्मान जी पहले यू वर टॉकिंग अबाउट दलित पॉलिटिक्स एंड द दलित सब्जेक्ट इन पॉलिटिक्स, तो पहले पॉलिटिक्स में, नॉट टू से दैट पॉलिटिक्स बिफोर वाज एनी काइंड ऑफ प्रिस्टीन पॉलिटिक्स, it was absolutely blind and violent in many ways. लेकिन जिस तरीके से अब आइडेंटिटीज को इंस्ट्रूमेंटलाइज किया जा रहा है, whether it is a Dalit subject or a woman subject or a whatever gendered subject or in terms of their particular positionality, politics itself has become extremely cynical, and it is only about numbers. Who makes up the numbers on which side, and what that means for different kinds of very cynical alliances.
jahan pe the idea is obviously not to change anything but to retain whatever is happening right now. Which brings me to the I think the last point that I want to make is that again we should be a cautionary tale for even of the dream of change. We are a nation who did change, who did move away from older, very status quoist kinds of politics. And we did desire that change as a country, as a nation. But where that change has been monstrous, it has taken extremely monstrous forms. And jitne pehle ki hamare certainties thi, wo to वैसे ही खत्म हो गई हैं. लेकिन जो अब ला रहे हैं, that feels very dystopian and it feels extremely fatal to our lived realities in a way. It is necropolitics of a very local kind that we are now facing, and which has been the result of this desire for change. And therein lies the rub. It is the consequence of something that we all desired. But now we see that the people are missing, as Derrida would say. Does it make sense for us to hold on to an idea of us, just to deal with the state as an arbiter of meaning? Or should we then participate in other modes of being, knowing that the state is not going to be an ally at all? In most likelihood, it is going to be an antagonist to the people, and which is a very difficult space to be in at this moment. Thank you. Beautifully said, Sandhya. Really helpful. एहसान, मैं सोच रही थी कि आपका एक्सपीरियंस स्टूडेंट पॉलिटिक्स का जो है, जो लोगों की सोच है, जिस तरह जो रिस्पॉन्ड आप कर रहे हैं हालात को, थोड़ा सा उसके बारे में अगर आप बताएं. और इसमें ये भी मैं शामिल करना चाहूंगी कि हमने जो डेमोक्रेसी के ख्वाब भी देखे थे, वो हम देख चुके हैं कि यूरोप में डेमोक्रेटिक मीन्स के थ्रू ही क्या चीजें हुई और हो सकी. और वही जो आप बात कर रही हैं कि द डिजायर काइंड ऑफ हैज इट्स ओन अनडूइंग इन इट, राइट, दैट द पोएटिक्स हैव देयर ओन अनडूइंग, एंड देन थिंक about the particular mode in which Imran Khan operates, proto-fascist personality that is doing something different than the particular ways in which corrupt leaders have always been with us. There's something about the concept of using democracy toward this end that seems, and to be able to then destroy it. कि आपका क्या ख्याल है? बहुत शुक्रिया. अभी कुछ देर पहले कासमी साहब और एहसन मुश्तबा साहब की जो कुछ रिकमेंडेशंस थी, हमने इस चीज की एक इंक्लूसिव सोल्यूशन की तरफ जाना है. इसकी जो रूट काज है हर प्रॉब्लम की, विरासत में एक मिलिट्री गवर्नमेंट स्टार्ट से मिला है. पार्टीशन के बाद डायरेक्ट आर्मी, जो हमारी एशिया में आई मेजॉरिटी आर्मी हमारी जो एसेट्स थे, एक ये. और दूसरी बात, जो पाकिस्तानी एज अ नेशन है वो कम्प्लीटली एट द सेम टाइम कम्प्लेक्स ऑफ एम्पेरिटी और कम्प्लेक्स ऑफ सुपीरियरिटी, दोनों चीजों की शिकार है. एक पब्लिक स्टंट सिंड्रोम जिसको हम कहते हैं, उसके शिकार एट द सेम टाइम है कि हमने इस चीज को फॉलो करना है. खासकर बलूचिस्तान के जो पॉलिटिक्स है इस वक्त, बलूचिस्तान की अगर मैं पॉलिटिक्स की बात बताऊं, यहाँ पर बिल्कुल न होने के बराबर लोग पॉलिटिक्स को जानते हैं, न होने के बराबर लोग इस चीज को जानते हैं कि हमने किस तरह लोगों को अवेयर करना है कि उनकी पॉलिटिकल राइट्स. जो हमारी डिस्कोर्स है प्रोग्रेसिव स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, तकरीबन 6 साल उनके साथ प्रोग्रेसिव के साथ चलता आ रहा हूँ, उनके साथ काम करता आ रहा हूँ पाकिस्तान में, लाहौर में, इस्लामाबाद में पार्टिकुलरली. तो यही चीज हमने जो सॉर्ट आउट करनी है, लोगों को अवेयर करना है कि हमने लोगों को किस तरह अवेयर करना है, उनके ज़हनों को किस तरह अवेयर करना है. बहुत ही कम लोग हैं जो हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान में है, और इस चीज के लिए टाइम लगनी है. पाकिस्तान में जो मैं तो यही कहूंगा कि इलिटरेट, मोस्ट ऑफ द पीपल आर इलिटरेट. इवन अगर आप हमारी ब्यूरोक्रेसी को देख ले, हमारी मिलिट्री को देख ले, हमारी पॉलिटिशियंस को देख ले, वो इंडिया के निस्बत अगर हम कंपेयर कर ले इंडिया के निस्बत, तो बहुत ही कम अवेयर हमारे पाकिस्तान के, पर्टिकुलरली ग्लोबल साउथ के एज ऑल अवेयर नहीं है. और खासकर अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, पाकिस्तान के लोग इस चीज के बहुत ज्यादा शिकार है. इसके लिए एक हमने इंक्लूसिव सोल्यूशन पर एक कोई वे आउट सॉर्ट आउट करनी है कि हमने क्या करना है कि लोगों को, जो यंग जनरेशन है, उसको किस तरह अवेयर कर ले, उनकी पॉलिटिकल थॉट किस तरह चेंज कर दे, उनकी जो पॉलिटिकल थिंकिंग है उस पर किस तरह काम करना है. सजेशन थी मेरी कि इस पॉडकास्ट के थ्रू हम लोगों को किस तरह अवेयर कर ले, कि यूथ पर काम करना है. बहुत शुक्रिया, थैंक यू हसन. थिंक हम थोड़ा सा कंक्लूजन की तरफ चल रहे हैं. अगर हसन या अली या जब कुछ ऐड करना चाहें टू सेंड अस इनटू द वीक, कि हम क्या चीज पे तवज्जो दें कि एज स्टूडेंट्स ऑफ द टाइम. वही अर्ज मैं कर रहा था कि जो बुनियादी तजाद है पाकिस्तान की अवाम और फौज, जो बुनियादी तजाद है, जो ट्रेड पॉलिटिक्स, सब आइन की बाला
بالادستی کی بات کر رہے ہیں. جی اس آئین کو بھی ریوزٹ کرنے اور ٹیپ کرنے کی ضرورت ہے. یہی وہ آئین ہے احمدی مسلمس کو کافر قرار دیا گیا تھا. ایک ممبر اسمبلی تھے مخدوم محمد زمان طالب المولا, وہ بھی ایبسنٹ رہے تھے اس دن, اس لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ لیگیسی چھوڑ جائیں. اور اس میں اسی آئین کے تحت بلوچستان میں آپ کو معلوم ہے کہ فوج کشی ہوئی تھی. اسی آئین کے تحت جو ہے حیدرآباد سازش کیس بنا تھا. نیب اسی آئین کے تحت نیب ولی خان کی جو ہے وہ بندش میں آئی تھی. تو اس کو بھی یہ جو نئی جنریشن ہے پیپل آف پاکستان تاریخ میں ہماری مہمان اسی سلسلے میں ایک شروع کرنی چاہیے, چاہے مختصراً, مگر یہ ساری چیزیں ہیں جو اصل مسائل کیا ہیں. انہوں نے بہت ایک حواسہ کھڑا کیا ہے, اسے ہمیں یہ توڑنی ہے. What's myth and reality? Totally. Yes, because reality is also produced. کہ ہمارا کام ڈبل ہے کہ اس کو بھی کوشچن کریں جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اصل ہے. اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کافی ڈرونی سی بات ہے کہ آئین کی بالادستی becomes the rallying point of a democratic challenge to democracy, you know, and I think کہ وہ اس اسٹیٹزم سے تھوڑا ڈر لگتا ہے کہ جیسے کبھی کوئی کہہ دے کہ ہاں ہمارے سامراج کے ساتھ رہیں گے تو ہم اسٹیبل ہیں, یا ہم ملٹری کے اندر رہیں گے تو ہماری روزگار ہوگی. مطلب یہ جو چیزیں ہوتی ہیں, جو لوگ ہمارے اپنے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہاں ہم دبئی کی نیشنلٹی لے لیں گے کیونکہ وہ بڑا آزاد ملک ہے اور کیونکہ انہوں نے اسرائیل سے دوستی کر لی ہے. تو بڑی کافی حیران کن باتیں ہیں جو ہو رہی ہیں. تو لیکن آئی تھنک لوگ ہیں جو سننا چاہتے ہیں, جو کہ تنگ بھی آئے ہوئے ہیں کہ ہماری آپشن اسٹیٹ اور لیک آف اسٹیٹ اور کانسٹیٹیوشن رہ گئے. ویئر از آور امپاورمنٹ ایز سٹیزنز, کہاں پہ ہماری ڈیموکریسی ہے؟ اینڈ the particular formation of liberal democracy that is more liberal, less democracy comes from the same powers that we have been ruled by. کہ شاید اس کے لیے ہمیں دوسری باتیں کرنی پڑیں گی کیونکہ ہر چیز ایک طرح سے proclaimed ہے نا, کسی کی جاگیر ہے. تو ہم کیسے اپنی جاگیر بنائیں, جو سندھیا کہہ رہی ہیں کہ how do we look away from the state, look away from the particular prescriptions of politics and look to کس طرح سے movements بنی تھیں جن کو state میں ضم کر دیا گیا. خاکسار movement کا کیا رول تھا, کون سی یہ movements تھیں جو کہ وہ نیشن اسٹیٹ تو نہیں مانگ رہی, تو ہم نے کیسے ان کی خواہشوں پہ اسٹیٹ کو مسلط کر دیا. یہ تو ایک عجیب ہی ہارٹ بریکنگ thing, you know, thinking of what could have been possible. Anyway, thank you حسن. علی, آپ کچھ کہیں گے آخری الفاظ آج کے لیے؟ ہاں, وہ ایک مجھے وہ شعر بہت وہ پسند ہے منیر نیازی صاحب کا, کسی کو اپنے عمل کا حساب کیا دیتے, سوال سارے غلط تھے جواب کیا دیتے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم صحیح سوال پوچھنے شروع کر دیں, جو حسن صاحب بھی جو بات کر رہے ہیں نا کہ سوال صحیح پوچھیں کہ تو وہ پردہ جو ہے وہ اٹھے گا. تھینک یو سو مچ. پرومس اور پریئر کا کنیکشن ایک ہے, شاید امید اور وعدے میں فرق ہے, اور اگر ہم اپنا وعدہ تھوڑا سا تازہ کریں تو اس فیض صاحب کی ہی دعا سے اینڈ کرتے ہیں, اور by the grace of all the powers on this earth, I think we will meet again and with more friends as time goes on. فیض صاحب ہی کی آواز میں ایک دعا ہے, تو وہ آپ سن لیجئے. ہاتھ اٹھائے ہم بھی, ہم جنہیں رسم دعا یاد نہیں. ہاتھ اٹھائے ہم بھی, ہم جنہیں رسم دعا یاد نہیں. ہم جنہیں سوز محبت کے سوا کوئی بت کوئی خدا یاد نہیں. ہم جنہیں سوز محبت کے سوا کوئی بت کوئی خدا یاد نہیں. آئے یہ عرض گزارے کہ نگارے ہستی میرے امروز میں شیرین میں پردہ بھر دے. میرے امروز میں شیرین میں پردہ بھر دے. اور وہ جنہیں کعبے گرام بھاری ایام نہیں, ان کی پلکوں پہ شب و روز کو ہلکا کر دے. ان کی پلکوں پہ شب و روز کو ہلکا کر دے. اور جن کی آنکھوں کو رخے صبح کا یارہ بھی نہیں, ان کی راتوں میں کوئی شمع منور کر دے. ان کی راتوں میں کوئی شمع منور کر دے. اور جن کے قدموں کو کسی راہ کا سہارا بھی نہیں, ان کی نظروں پہ کوئی راہ اجاگر کر دے. جن کا دین پیروی جذب آیا ہے, ان کو ہمت کفر ملے, جرأت تحقیق ملے. جن کا دین پیروی جذب آیا ہے, ان کو ہمت کفر ملے, جرأت تحقیق ملے. اور جن کے سر منتظر تیغ جفا ہے, جن کے سر منتظر تیغ جفا ہے, ان کو دست قاتل کو جھٹک دینے کی توفیق ملے. دست قاتل کو جھٹک دینے کی توفیق ملے. اور عشق کا سر نہاں جان تپا ہے جس سے آج اقرار کریں
और तपिश मिट जाए, इकरार करें और तपिश मिट जाए, और हर हम ये खटकता है जो कांटे की तरह, आज इकरार करें और तपिश मिट जाए. Be well.